Hello students, a very good evening to all of you. Welcome to my channel. This is a very important class on literary criticism and today we will talk about Matthew Arnold as a critic. But before starting, I want to give you a brief introduction about myself. Good evening Papri, good evening Ektaba, welcome. My name is Brishti Mukherjee. I have qualified NK UGC NET exam in English literature 4 times and have also qualified West Bengal state examination. I have 2 years of teaching experience. Moreover, I have also taught in NPTEL online course from IIT Madras 3 times. So that is all about myself. This is the link of my Telegram channel. The link is also given in the description box. So those of you who have not joined yet, please join to get notification of all important classes. And also please don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel so that many more new learners can join. Good evening Pooja, good evening Rajkishore, welcome. These are the timings of your classes Monday to Friday at 8:30 p.m. Saturday, Sunday off. So don't forget to join me live. Please subscribe the channel and press the bell icon to get notified. Okay, so let's start. We have today we will talk about Matthew Arnold as a critic. So Matthew Arnold, his timeline is 1822 to 1888. Okay, this is the timeline of Matthew Arnold. First of all, we will look at his biographical details. Matthew Arnold was born on 24th December in Laleham, England. His father Thomas Arnold was a headmaster and Thomas Arnold के डेथ के बारे में उन्होंने एक एलिजी लिखा था, that is Rugby Chapel. Rugby Chapel is an elegy written by Matthew Arnold on the death of Thomas Arnold. Yes, Rajkishore, definitely you will clear. Don't worry. Wait for the next attempt. Good evening, Gitu. Welcome. So his father Thomas Arnold was a headmaster. He studied at Winchester College. He later moved to Balliol College, Oxford, and he died of heart failure. So these are his biographical details, not so much important. We will directly move on to his criticism. The first important concept जो आर्नोल्ड ने दिया था, that is touchstone method. Very important term, touchstone method, which is actually discussed in the book Study of Poetry, Matthew Arnold's The Study of Poetry, जिसमें उन्होंने ये बताया था about the concept of touchstone method, and this concept was inspired by Longinus and addition. Longinus and addition. Okay, so इससे inspired थे this kind of idea. It is useless to lay down certain characteristics as criteria of great poetry for the critics. So Arnold is saying that it is very debatable to judge, or it is very difficult to judge which poetry is ideal, which poetry is the best or not, right? तो इसमें एक प्रॉब्लम है कि एक एक क्रिटिक का, हम कल ही बात कर रहे थे कि ऑल रीडिंग्स आर मिसरीडिंग, विच रोला बार्ट हैज सेड. तो इन दैट सेंस हर एक क्रिटिक का जो अपना जजमेंट होता है उसमें कोई ना कोई बायसनेस तो जरूर होता है. तो ये जो क्राइटेरिया है टू जज अ पर्टिकुलर पोएट्री और टू जज एनी काइंड ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट, इट बिकम्स वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज इट वेरीज फ्रॉम critic to critic. Matthew Arnold is trying to focus on a universal characteristics of evaluating a poetry. तो इसके वजह से उन्होंने टचस्टोन मेथड के बारे में बात किया. ठीक है, तो क्या बता रहे हैं आर्नोल्ड? इट इज बेटर टू हैव recourse to concrete examples to take specimen of poetry of the very highest quality. These lines are from the study of poetry. So Matthew Arnold is saying that you need to compare it with the really highest kind of poetry and those poetry which are universally regarded as the specimens of best poetry. तो उससे आप कंपेयर करो एंड ऑटोमेटिकली यू विल गेट द आंसर whether it is truly classic or not. ठीक है, तो those work of art, basically Arnold is talking about the classical works of art. इसको उन्होंने कहा था touchstones.
ठीक है. If a work of art is appreciated by people of different countries across time, then it is a masterpiece. तो हर वर्क मास्टरपीस नहीं होता है, वही वर्क मास्टरपीस होते हैं जो सालों साल बाद भी डिफरेंट कंट्रीज के लोग इक्वली इंपॉर्टेंट तरीके से एक्सेप्ट करते हैं. वही है इस टाइप का एग्जाम्पल ऑफ अ मास्टरपीस. ठीक है. While analyzing any literary text, a critic must judge its value in comparison with some brilliant passages from ancient masterpieces. Even a single line or quotation can serve the purpose. So these passages are considered as touchstones to other poetry. So touchstone means actually touchstone का क्या word है? Touchstone in Bengali we call it Porosh Pathor. So touchstone means a particular type of stone which helps to judge the authenticity of the gold. ठीक है. एक गोल्ड वो मतलब टोटली सही है या फिर उसमें कुछ डिफरेंट मेटल्स को मिक्सअप किया गया है, इसको जज करने के लिए हम टचस्टोन का यूज करते हैं. इट इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टोन विच हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द ओरिजिनल गोल्ड और द प्योर गोल्ड. ओके. यस, एज शेक्सपियर, राइट. तो अब यहाँ पर टचस्टोन की बात यही है कि ये जो मास्टरपीसेस की बात कर रहे हैं आर्नोल्ड, ये मास्टरपीस वर्क और क्लासिकल वर्क्स, दीज आर कंसीडर्ड एज टचस्टोन्स बिकॉज इससे आप मॉडर्न पोएट्री को, मॉडर्न मीन्स कंटेम्पोररी पोएट्री को आप कंपेयर करके बता सकते हो कि भाई ये उस लेवल तक पहुंचा है या नहीं. दिस विल बी योर आइडियल मीडियम ऑफ कंपैरिजन. ठीक है. ओके. तो उन्होंने कुछ पर्टिकुलर ऑथर्स के नाम बताए हैं जिनके पैसेज को हम यूज कर सकते हैं एज टचस्टोन, लाइक मिल्टन, दांते, होमर, शेक्सपियर. तो ये नेम्स याद रखना. इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स आर नॉट रेफर्ड बाय मैथ्यू आर्नल्ड एज टचस्टोन. तो आपको आंसर देना होगा. सो जनरली उन्होंने 4 ग्रेट पोएट्स के बारे में बात की है. Milton, Dante, Homer and Shakespeare. Their passages must be considered as touchstones. And आज जो भी राइटर उसके बारे में लिख रहे हैं उसको आप उस राइटर के वर्क से कंपेयर करो. Then your comparison will have validity and then you can easily identify which poetry is better or not. Through such comparative analysis, Arnold surveyed the entire track of poetry and divides the poets into categories of good and great, not so good and not so great. जैसे हम रेटिंग स्केल में डिवाइड करते हैं ना, एग्री, मोस्टली एग्री, डिसएग्री, कॉम्प्लीटली डिसएग्री, न्यूट्रल, राइट. कोई भी सर्वे रिपोर्ट में ऐसा स्केल होता है, तो वैसे ही आर्नोल्ड ने भी कैटेगराइज किया है पोएट्री को कि दिस इज एक्सेलेंट, दिस इज mediumly good, this is too good, this is only good, bad, worse, इस टाइप से उन्होंने कैटेगराइज किया. ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेक्स्ट. so the concept is very easy, you can easily remember it. okay, next concept पे हम आते हैं, poetry as a criticism of life. very interesting concept given in again the study of poetry. study of poetry में यही दोनों important concept है. one is touchstone method, another is poetry as criticism of life. Arnold is against the view that poetry is something art for art's sake. Arnold doesn't believe that. He also believes that poetry must have some social purpose. And criticism of life का मतलब ये है the noble and profound application of ideas of life. ये Arnold का ही statement है within quote. ठीक है. So criticism of life means the noble and profound application of ideas of life. Poetry does not represent life as it is, rather it adds something to it from his own noble nature, which contributes to the criticism of life. Okay, so poetry में क्या है, poetry as a criticism of life हम बात कर रहे हैं. तो poetry actually doesn't represent life, rather poetry क्या करते हैं, वो कुछ चीजें उनमें add कर देते. Yeah, so poetry is not the exact representation of reality, but yes, poetry is based on real world, real characters, and it adds something to the understanding of the real world. So the line is very complex, but the
ओपिनियन इज वेरी सिंपल। आर्नोल्ड बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पोएट्री इन जनरल एकदम ऐसा नहीं है कि रियलिटी में जो हो रहा है पोएट्री वही बता रहे हैं, but poetry should be modeled on realistic events so that it can give us a different perspective, a new perspective to highlight or to identify or to analyze those incidents of our life. So poetry adds something to our knowledge, to our experience of the whole world. But poetry itself is not concerned with the exact details of daily life. ठीक है, जैसे देखो प्लेटो ने कहा था कि पोएट्री इज थ्राइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी, राइट? तो वो नेगेटिव सेंस में कहा था, बट आर्नोल्ड ये बहुत सही बात कह रहे हैं। हमने कल भी बता रहे थे कि रियलिटी क्या है ये तो किसी को नहीं पता है, ट्रॉमा ऑफ द रियल। रोला बार्ट भी वही बता रहे कि डिग्री जीरो मीन्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल राइटिंग विच इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब ये है कि एग्जैक्ट रियलिटी को रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है। व्हेन यू टॉक अबाउट पोएट्री और एनी काइंड ऑफ लिटरेरी आर्ट, इट शुड हैव एन इमेजिनेटिव टच इन इट, but that doesn't mean that it is completely unreal. It has no connection with the real world. That is not the thing. Connection must be there, and with that connection poetry can help us to understand our life better, and also poetry teaches us how to make our life better. Poetry is the only surviving thing in the world and superior to science. Very powerful statement. Arnold ये बता रहे हैं कि poetry is superior to science. The highest type of poetry must deal with moral ideas, but moral does not mean dry preaching or narrow didacticism. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू टॉक अबाउट टीचिंग इन पोएट्री। तो जो सिडनी ने भी कहा था कि बोथ इन डिलाइट, बोथ इंस्ट्रक्शन एंड डिलाइट, द मेन पर्पस ऑफ पोएट्री इज टू बोथ इंस्ट्रक्ट एंड डिलाइट। So instruct doesn't mean that you are always saying that this is wrong, this is right, you must do this. This kind of dry preaching is not accepted, but moral lesson should be hidden inside the story. जैसे देखो हम शेक्सपियर की ड्रामास की बात करते हैं, तो हर एक ड्रामा में, स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रेजेडीज, तो ट्रेजेडीज में देखो हर एक ट्रेजेडीज में कोई ना कोई मॉरल है, ठीक है, बट दैट इज नॉट एक्सप्लिसिटली रिटन। फॉर एग्जाम्पल मैकबेथ टीचर्स अस द moral lesson that we should not be over ambitious nature must bring down uh, or over ambitious nature must bring the fall in your life. तो ये मॉरल है। ओथेलो से देखो क्या मॉरल है। फ्रॉम द प्ले ओथेलो वी कैन लर्न दैट ओवर सस्पिशियसनेस इज नॉट अ गुड थिंग, and you must trust your friend and family members rather than believing the words of any outside, ठीक है। तो ये ओथेलो का है। किंग लियर से क्या मॉरल मिलता है कि टू मच एफेक्शन एंड ब्लाइंड एफेक्शन टुवर्ड्स योर सन्स और डॉटर्स विल प्रूव टू बी फेटल फॉर यू, राइट। हैमलेट से हमें क्या सीखने को मिलता है कि प्रोकास्टिनेशन इज अ लेजी मैन्स एपोलॉजी। यू शुड नॉट प्रोकास्टिनेट बिकॉज इट ओनली डिलेज योर टाइम, रादर वैल्यू योर टाइम एंड डू द जॉब इमीडिएट। तो ये देखो मॉरल्स है, हमें ट्रेजेडी को पढ़कर ही पता चलते हैं। इडिपस से हमें क्या मॉरल मिलता है कि फेट कैनॉट बी अवॉइडेड, फेट इज ऑल पावरफुल, वी मस्ट एक्सेप्ट व्हाट इज देयर इनसाइड आवर फेट, and we live and we should live our life accordingly. So these are all moral lessons, but Shakespeare has not done any dry preachings, ठीक है। बस स्टोरी के अंदर अंदर ही वो एक डायडैक्टिसिज्म तैयार कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली ऑडियंस के माइंड में ये मॉरल आ जाते हैं कि ओवर एम्बिशियसनेस इज हार्मफुल। सेम मॉरल इज फॉर डॉक्टर फॉस्टर। वहां पर भी देखो सेम मॉरल है कि ओवर एम्बिशियस नेचर इज हार्मफुल एंड नेवर लूज योर बिलीफ इन गॉड। God will always be there to punish you if you don't believe in Him, right? So yes, absolutely right, Papri. Very good. It is an addition of something through which we can see everything around us with a much beautiful way. Yes, Forest के arts poetica. तो और क्या बता रहे हैं about criticism of life? The question how to live is answered in implication. That is moral. देखो यहाँ पर definition भी बता दिया गया है कि how to live, इस क्वेश्चन का आंसर जो है दैट इज द मॉरल ऑफ द पोएम। पोएट्री मेक्स मेन ग्रेटर एंड नोबलर, दैट इज व्हाई प्लेटो इज सो कंसर्न्ड अबाउट पोएट्स।
right? कि poets जो लिखेगा वही बच्चा पढ़ेगा, and ultimately it will create a bad impact if the poet cannot write with responsibly. That is why Plato has strictly censored specific kinds of lines, specific kinds of stanzas, which must not be read by young minds or young people. ठीक है, तो ये बात है अबाउट पोएट्री एज क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ. ओके, तो नेक्स्ट हम आते हैं उनके इंपॉर्टेंट वर्क में, दैट इज कल्चर एंड एनार्की, पब्लिश्ड इन 1869. कल्चर एंड एनार्की, इट इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट वर्क. स्टडी ऑफ पोएट्री हमने बताया, उसके बाद कल्चर एंड एनार्की. तो इसमें कल्चर और एनर्जी दोनों के डेफिनेशन दिया है आर्नोल्ड ने. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज अ सीरीज ऑफ पीरियोडिकल एसेज published in the Cornhill magazine in 1867, 67 to 68, and thereafter it is published as a book form in 1869. So these are basic things. Subtitle है an essay in political and social criticism. For this work, Arnold is known as apostle of culture. ठीक है, अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट क्या. तो ये डेफिनेशन दिया था आर्नोल्ड ने, जरूर याद रखना इसको. मैं कुछ की पॉइंट्स आपको बता देती हूँ. कल्चर इज अ स्टडी ऑफ परफेक्शन, seeks to do away with classes, to make the best that has been thought and known in the world current everywhere. Thought and known in the world current everywhere, to make all men live in an atmosphere of sweetness and light. And this particular phrase is taken from the Battle of Books. ये बहुत बार आए हैं एग्जाम में. जोनाथन स्विफ्ट के बैटल ऑफ बुक्स से ये स्टेटमेंट लिया, ये फ्रेज लिया गया है, स्वीटनेस एंड लाइट. तो कल्चर बेसिकली क्या है? आर्नोल्ड इज सेइंग दैट इट इज अ स्टडी ऑफ परफेक्शन and it is actually a way to do away with classes. So culture is such a thing which can avoid or which can wipe out all kinds of distinction, including class distinction. And finally, it will present something which is currently seen everywhere. ठीक है, जो भी मतलब करंट ट्रेंड्स चल रहा है वही रिप्रेजेंट करेगा कल्चर. And also to create a very beautiful environment so that human beings can live happily. That is culture. Culture is actually the combination of the best which has been thought and said in the world. तो इस दुनिया में जो भी चीजें बहुत अच्छा है उसका एक कॉम्बिनेशन होता है कल्चर. ठीक है, यस, बार्बरिक फिलिस्तीनीज एंड पॉपुलिस, आई विल जस्ट मेंशनिंग दैट. तो ये बात है कल्चर की डेफिनेशन का. बहुत इजी डेफिनेशन है, आप याद रख सकते हो. Then, as you have said, he classifies the people into three groups: barbarians, Philistines, and populists. Okay, so barbarians कौन है? They represent the aristocracy who have gifts and graces, but they have no internal beauty. Their beauty is all external. ठीक है, they are very much cruel, crude, and not so um, not so much beneficial for the poor people of the society. So they are barbarians. ठीक है, so they have some kind of gifts and graces, but they are utilizing it in form of exploitation. They have sweetness but lack light and enlightenment. ठीक है, दूसरे ग्रुप में आते हैं फिलिस्तीन. They form the major portion of the population. They are the middle class. Philistines are the middle class people. We all are part of that. And middle class people, they are also very cheap minded. They only focus on materialistic desires. They have no high thinking, very sophisticated thinking. They do not have. They do not possess the richness of mind. And populace आया है population से. It refers to the lower class. They are bereft of cultural understanding. They are outside the border of culture or the mainstream culture, and they are much more ignorant about the whole world, so they live as downtrodden. They are the popular. तो ये तीनों काइंड्स ऑफ पीपल के बारे में उन्होंने बताया. ठीक है, दैट इज अबाउट कल्चर एंड एनार्की. ओके, मेन पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम आते हैं. नेक्स्ट एंड लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ टुडेज क्लास, दैट इज हेलेनिज्म एंड हेब्रेइज्म.
दोनों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. इट इज ऑल्सो गिवन इन कल्चर एंड एनार्की. तो हेब्रिज्म क्या है? इट गिव्स इंपॉर्टेंस टू फॉर्म ओबीडियंस, moral power and character. It is doing that thing which you always believe right for you without any doubt. So it is a kind of independent thinking that I believe it will be right for me, so I will do it. I will not rely upon the opinion of the elders or the opinion of the society. Whatever I think is right is right. That is Hebraism in a single line. तो ये डेफिनेशन देखो आर्नोल्ड ने दिया था. हेब्रिज्म इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ यूसेज, trait or characteristic of the Hebrew language. By successive extension, it is often applied to the Jewish people, their faith, national ideology or culture. So actually में यही Hebraism, ठीक है. But if we apply it to the condition of our life, then we can say that Hebraism means something which you always believe right for you without any doubt. That should be Hebraism. कि आप अपने लाइफ के डिसीजन खुद लेते, ठीक है. एक्चुअली ये हिब्रू लैंग्वेज से आए हैं, ऑफन अप्लाइड टू द ज्यूइश पीपल, बट इन जनरल अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से बात करें तो इट इज नॉट अबाउट ओनली ज्यूइश पीपल, रादर इट हेल्प्स अस टू concentrate on the process of leading our life according to our own wish. दूसरा कॉन्सेप्ट है हेलेनिज्म. इट मीन्स क्वेश्चनिंग एवरीथिंग in a very simple term. The word is derived from Greek word Hellenismos, which means the people of Greek lineage and set of values followed in ancient Greece. तो आप सारी चीज को क्वेश्चन करो, दैट इज हेलेनिज्म. Yes, right, Pooja, to see things, and Hebraism is doing and conduct. It focuses on seeing the world and reality as it really is and spontaneity. Yes, you have rightly said it. Hellenism means to accept the world as it is and try to question everything inside the world. And in दोनों चीज का ही फाइनल एम क्या है? To partake the divine life with knowledge and action. That is the ultimate goal of these two ideas. Okay. अब उनके कुछ अदर आर्गुमेंट्स है, वो क्या है बहुत शॉर्ट में मैं बता दूं. पोएट्री मस्ट पोजेस हाई ट्रूथ एंड सीरियसनेस. आर्नोल्ड ने बताया था. Poets should imbibe classical values, not to copy the exact classical works which may be out of context. So he is talking about touchstone method, definitely, but that doesn't mean that to qualify as a classical work, you just need to copy paste what Homer has written, what Shakespeare has written. That is not the meaning. In that case, you will lose your individuality. तो ये ब्लाइंड इमिटेशन नहीं करना है, आपको उसके आइडियाज को समझना है. डायरेक्टली आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको कुछ चीजें समझना जरूरी है, उसके बाद आप उसको अप्लाई करो, बट नॉट टोटली. In Functions of Criticism at Present Time, another important work of Arnold, published in 1864, he mentions that criticism is an art of judgment. The true quality of a critic, Arnold इसके बारे में भी उन्होंने बात किया है, and according to him, that criticism means judging life. So the duty of a true critic is very great. The true critic must be objective, genius in nature, objectively analyze करने हैं, कोई भी biasness नहीं होना चाहिए. And a critic must have the knowledge of the best that is thought and known to the world. जो बेस्ट सोर्सेस ऑफ नॉलेज है, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, उनके पास ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है. अदरवाइज ही कैनॉट बिकम अ क्रिटिक. नेक्स्ट क्या है? क्रिटिक्स मस्ट कंसीडर द फ्यूजन ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट. ही मस्ट लुक एट फॉरेन लिटरेचर्स एज वेल. यस, जो मैंने अभी आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ उसी राइटर के वर्क्स को नहीं, आपको बाकी वर्क्स को भी पढ़ना है. इसलिए देखो क्रिटिसिज्म में हमें कितना ज्यादा रेफरेंस मिलता है टू लैटिन वर्क, टू फ्रेंच वर्क्स, राइट. तो ये हर एक क्रिटिक का धर्म है कि अगर वो ट्रूली क्रिटिसाइज करना चाहते हैं तो उनको एक वास्ट नॉलेज होना बहुत जरूरी है, नॉट ओनली ऑफ हिज ओन लैंग्वेज, ओन लिटरेचर, बट ऑल्सो ऑफ अदर फॉरेन लिटरेचर. नेक्स्ट क्या है? आर्नोल्ड बता रहे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. अ क्रिटिक मस्ट हैव 3 क्वालिटीज. फर्स्ट क्या है? एबिलिटी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड.
वेरी ट्रू, ये तो होना ही है. सेकंड है टू गाइड पीपल व्हाट टू रीड एंड हाउ. एंड थर्ड पॉइंट है प्रिपेयर एन एटमोस्फियर विच विल स्टिमुलेट द आर्टिस्ट. तो इन तीनों क्वालिटीज, इसमें एक्सप्लेन की कुछ नहीं है, आप इजीली समझ रहे हो कि क्रिटिक को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है, लोगों को गाइड करना है, बिकॉज क्रिटिसिज्म एक्चुअली हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द ऑथर. तो इसलिए क्रिटिक को बहुत अच्छी तरीके से लिखना चाहिए, मतलब रिस्पॉन्सिबल तरीके से लिखना है. देन क्रिटिक मस्ट बी अ वेरी enthusiastic source of the author's writing. So critic must encourage the author to write so that the author's talent should not be ignored. Okay, so these are the major concepts जो आर्नोल्ड के बाकी concepts हैं. तो बस ज्यादा कुछ इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप मेजर मेजर कॉन्सेप्ट्स याद रखो. द क्वालिटीज ऑफ अ क्रिटिक, हेलेनिज्म, हेब्रेइज्म, पोएट्री एज क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ एंड टच स्टोरी. ठीक है. यस, क्रिटिसिज्म शुड बी मोटिवेटिंग, राइट. मोटिवेटिंग मीन्स कि अगर आप किसी को क्रिटिसाइज भी कर रहे हो, मतलब अगर आप किसी का नेगेटिव क्रिटिसिज्म भी कर रहे हो, तो आप ऐसा ना लिखो कि वो डिमोटिवेटेड हो जाए. आपको बस मतलब एक साथ मेरिट डिमेरिट्स आपको बताना है. And it should not be too harsh when you are pointing out the defect. Yes, that is the idea. Okay, so that is the end of today's class. Thank you all for joining. This is the link of my Telegram channel. The link is also given in the description box. So those of you who have not joined yet, please join to get notification of all important classes. अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज बता दूं. I have exam of primary TET on 11th December. So that is why next week your classes will be off. नेक्स्ट वीक मैं क्लासेस को ऑफ रख रही हूँ. वी विल मीट डायरेक्टली ऑन 12th December. आई विल ऑल्सो सेंड अ मैसेज इन द टेलीग्राम ग्रुप. तो बस एक हफ्ते ही बाकी है मेरी एग्जाम की, तो उस हफ्ते मैं क्लासेस नहीं ले रही हूँ ड्यू टू माई प्रिपरेशन. So I will continue the classes from 12th December. Okay, so don't forget to join me live. Please subscribe the channel and press the bell icon to get notification. Thank you all. Bye bye everyone. Good night. See you all 12th December.